हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंदना's कुकिंग। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड पिज्ज़ा। तो उसके लिए जो सामग्री लगेगी वो है बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, कैप्सिकम, कसा हुआ चीज, चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो, नमक, काली मिर्च पाउडर और अमूल बटर। और सबसे महत्वपूर्ण ब्रेड स्लाइस और पिज्ज़ा सॉस चाहिए। कौन सा भी ले सकते हैं लेकिन पिज्ज़ा सॉस चाहिए। सबसे पहले हम प्याज को लेंगे। इसमें टमाटर मैंने सब आधा आधा लिया है। 3 ब्रेड पिज्ज़ा हो सकते हैं इसमें। बारीक कटा हुआ कैप्सिकम आधा, उसमें हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो हाफ टी स्पून, नमक स्वादानुसार, और पेपर, काली मिर्च पाउडर। इसे मिक्स करना है। ब्रेड स्लाइस को 1 चम्मच पिज्ज़ा सॉस लगाएंगे। जो मिक्सचर बनाया है बना लेंगे इस तरह से। और उस पर चीज स्प्रिंकल करेंगे। गैस पर फ्राइंग पैन रखेंगे। थोड़ा बटर लगाएंगे, थोड़ा ही लगाना है। उसमें पिज्जा ब्रेड रखना है। गैस मीडियम फ्लेम या स्लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद चीज़ पूरा मेल्ट हो चुका है और पीछे से भी थोड़ा रोस्ट हो चुका है। तो इसे हम निकाल लेंगे। मैंने मोज़रेला चीज़ यूज़ किया है तो जल्दी पिघलता है, तो वो लेना है। अगर आपके पास मोज़रेला नहीं है तो कौन सा लेना है। ये ब्रेड पिज्ज़ा हॉट एंड स्वीट सॉस के साथ खाया जा सकता है। तो लीजिए, तैयार है ब्रेड पिज्ज़ा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।